my dear students. Welcome to your science class. Today we are going to start a new lesson, that is force and pressure. You all must have heard about the term force, and you have also studied about this in your earlier classes. Now we will study this in detail. In this chapter, we will cover the following topics. First, force, balanced and unbalanced force, types of force, contact force and non-contact force, and pressure. Let's get started. In the previous classes, we have studied that force is either a push or a pull. Force can make an object move, stop, change its direction, or change its shape. Various types of forces also we have studied, like gravitational force, electrostatic force, magnetic force, frictional force, etc. Force in simple terms is defined as a push or a pull on an object. For example, when you push a shopping cart, when a gardener push a lawn mower, when a player kick a football, all these are due to force, push and pull. Okay. So we can say when we apply a force on any object, it has an effect on the object. जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगाते हैं तो उसका कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स का कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट आता है. सो नाउ वी विल सी द फॉलोइंग इफ़ेक्ट्स. वी कैनॉट सी द इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स, वी कैनॉट सी फोर्स. हम देख नहीं सकते फोर्स को, बट वी कैन सी इट्स इफ़ेक्ट. हम उसके इफ़ेक्ट्स को फील कर सकते हैं, देख सकते हैं, बट वी कैनॉट सी फोर्स. सो फर्स्ट इफ़ेक्ट इज़ मूव एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और इंक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की रेस्ट पे जो ऑब्जेक्ट है उसको मूव कर सकता है, प्लस उसकी स्पीड को भी चेंज कर सकता है एक मूविंग ऑब्जेक्ट की. सो वी कैन से लाइक फॉर एग्जांपल बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ स्टेशनरी बॉल और बाय पुशिंग और किकिंग इट, इट स्टार्ट मूविंग. इफ़ यू पुश इट हार्डर द बॉल विल मूव मोर फास्टर विद अ ग्रेट स्पीड. सो फर्स्ट इफ़ेक्ट क्या है कि कोई भी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, कोई भी सपोज स्टेशनरी कार है, कोई स्टेशनरी बॉल पड़ी है, स्टेशनरी मीन्स रेस्ट पे रुकी हुई, और अगर हम उस पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं, सपोज़ एक कार, स्टेशनरी कार है और एक मैन उसके ऊपर अपना पुश करके उस पर फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स लगाता है, तो ही अप्लाइज द फोर्स ऑन इट, तो कार विल मे बिगिन टू मूव. सपोज़ जो स्टेशनरी बॉल थी उसको किक किया आपने तो वो ऑटोमेटिकली मूव करने लग जाएगी, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ फोर्स. नेक्स्ट इफेक्ट इट कैन डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट और स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट. ये स्पीड को डिक्रीज भी कर सकता है किसी मूविंग ऑब्जेक्ट की, या उसको बिल्कुल स्टॉप कर सकता है. फॉर एग्जाम्पल, एज यू कैन सी इन द पिक्चर्स, by applying a force in the direction opposite to the direction of a moving ball. अगर कोई भी फोर्स ऑपोजिट डायरेक्शन से अप्लाई होता है तो या तो ये उस मूविंग ऑब्जेक्ट की स्पीड को स्लो कर देता है, लाइक बॉल की स्पीड को स्लो इसने बिल्कुल स्लो कर दिया, या उसको बिल्कुल स्टॉप कर देता है, उसके मोशन को बिल्कुल रोक देता है, स्टॉप कर देता है, उसको स्टेशनरी बना देता है. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट. एज यू कैन सी, there is in cricket a batsman plays his or her shot by applying a force on the ball with the bat. So there is a change in the direction of motion of a ball. The ball moves in the another direction. Next is change the shape of the object. Like for example, we can change the shape of a dough while making chapatis by applying force on it. And when you play with the clay or make something from the clay, you apply force on the clay and it changes its shape. So here you can see one more example. This man is stretching the spring and the shape of the spring is changed. मतलब जो man अपने force लगा के उसकी shape को change कर दिया spring की इसने. So these are all effects. So now we can conclude with this.
force is a push or a pull that can change the state of motion of an object or change its shape. So what is force? Force क्या है? Force एक push and pull है जो object की state में change करता है. State, change in state, it includes change speed of an object, change direction of a motion of an object और both. State में क्या क्या आ जाता है? Direction change हो रही है object की जो motion में है, या उसकी speed increase हो रही है या decrease हो रही है. And force इसकी shape में, किसी भी object की shape में भी changes ला सकता है. So here you can see push or pull of an object is called force. Force come into play due to the interaction. Interaction means when an object with another object results in force between two objects. Like a man, you can see here, he is pushing the car, a girl pulling a chair. So these are all examples of applying force. So effects, you can see, it can change the state of the object, moving object, it can change the shape and size of the object. Okay, so that's all for today. Thank you.